once again and welcome to module 9 of this crypto mastery course. I hope all of you guys are doing well. Congratulations. You're 80% done, and after watching this module, आपका जो crypto course है वो 90% complete हो जाएगा. And I think this might be one of the smaller modules that we do because we're going to be talking about three very important things which help tell you about the health of any certain asset. आज के टॉपिक के अंदर हम मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द बुल मार्केट सपोर्ट बैंड. We will also talk about this one very important indicator, which is called the EMA ribbons and what it does. And then finally, in the end, I will talk to you guys about uh, two types of analysis. So in total, अगर हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी और मार्केट के अंदर देखें, तीन किस्म के एनालिसिस होते हैं. टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स कवर किए हैं, और जो दो एनालिसिस रह गए थे टेक्निकल एनालिसिस के बाद, वो एक था फंडामेंटल एनालिसिस, and the other one which is also very important is called sentiment analysis. So after this you will understand what fundamental analysis is, what sentiment analysis is, and obviously we've done the technical analysis bit. वन रिक्वेस्ट एज ऑलवेज, प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक इस मॉड्यूल को सुनिएगा. किसी जगह पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है, प्लीज़ रिवाइंड बैक. इफ़ यू हैव टू टेक अ ब्रेक, टेक इट राइट नाउ, so there are no distractions when we start the lecture for you. So the first thing that we are going to talk about today is called the bull market support band. अब आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये bull market support band क्या हो सकता है, because bull obviously means when the price is going up. लेकिन if I go and open this bull market support band right over here, and you always watch this on the weekly time frame. Weekly time frame पे आप bull market support band को देखते हैं. And like I've mentioned to you guys many times, that you need to understand the term DDE. Data determines everything, right? Let me just quickly open this chart on Bitstamp because Bitstamp has the most history. So if you're looking to see the most history in regards to BTC, I tend to open the Bitcoin chart on the weekly time frame on Bitstamp because Bitstamp के ऊपर सबसे ज़्यादा information है. Now, जो bull market support band है, this bull market support band is created by using two averages. Okay, so two averages are used to determine the health of the bull market support band. And let me just quickly delete these lines so I can tell you what those averages are. So if I go and open the bull market support band, you guys can see in inputs, एक तो हम इसको weekly time frame पे देखेंगे, and then the moving averages are 20 week simple moving average and 21 week exponential moving average. ये दो averages हैं जिनको हम देखते हैं, और आगे जाके मैं कुछ और important averages के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो किस तरीके से यूज़ हो सकती है और किस तरीके से why they are significant. But in the bull market support band, 20 week simple moving average and 21 week exponential moving averages are used. And once again, like I said before, इसको हम weekly time frame पे देखते हैं. Now, अगर आप weekly time frame पे इसको देखेंगे, you will realize one thing, कि ये जो दो moving averages हैं, simple moving average 21 and 20 week exponential moving average जो है, every time BTC is above these averages on the weekly time frame, and we hold it as support, whether it's the top line or the bottom line, we tend to get a pump. And every time we break below these moving averages, this moving average not only becomes resistance, but a, a bearish trend also starts, because since we're looking at this on a higher time frame, HTF के ऊपर हम देख रहे हैं.
तो हम इसको अगेन डी डी ई, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग, पीछे जाएंगे और देखेंगे कुछ साइकिल्स में इसका किस तरीके से बिहेवियर है. सो इफ़ वी गो ओवर हियर और आप ये देखें हैविंग की, मैंने आपको पहले भी थ्योरी बताई हुई है कि जब हैविंग होती है तो आपकी बुल मार्केट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है. सो इफ़ वी गो इन वॉच इट्स फ्रॉम 2000 April 2020 when the bull market began, you guys can see that it followed a staircase pattern sort of a thing where it came back up and came back down to test this moving average again and again, right? और इसमें जो हेल्थी चीज़ होती है वो ये होती है कि ये बार बार टेस्ट हो और फिर ऊपर जाए, टेस्ट हो और फिर ऊपर जाए. और आप इस एरिया में देख सकते हैं कि इस एरिया में बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टेस्ट नहीं हुई थी. और जब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टेस्ट नहीं होती तो यूजुअली होता है कि व्हेन इट्स गॉन टू फार अबव एंड व्हेन इट कम्स बैक डाउन टू रीटेस्ट इट, अमूमी तौर पे एक तो बेयर मार्केट भी आने वाली होती है एंड इट डजंट होल्ड इट एज सपोर्ट. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. तो ये हम आगे जो साइकिल आएगी उसके अंदर भी देखेंगे. लेट मी क्विकली डिलीट दिस लाइन आल्सो. ओके, सो दिस लाइन विल डिलीट एज वेल. सो इफ वी सी ये ऊपर जाता जा रहा है, इट्स फॉलोइंग अ पाथ, इट्स फॉलोइंग अ पाथ, एंड ओवर हियर व्हेन वी वेंट टू द ऑल टाइम हाई अराउंड हियर, it finally came back down to test it as support. लेकिन जब उसको टेस्ट करने की बारी है तो we went straight all the way down. ठीक है. फिर उसके बाद we spent a couple of weeks because this last cycle was a double top cycle. So हमने उसके बाद क्या किया, we went down, right, spent a lot of time below the bull market support band, right, over here इस जगह पे we were finally able to make a W pattern right here. Again bottoming phase होता है. उसकी जब neck line टूटी and then we broke it with volume, as you guys can see, we came back down to test it and we held it. Once we held it as support, फिर आपको एक और pump मिला all the way from 28,000, I think 28,000 से वापस तकरीबन 70,000 पे BTC गया. And then finally when the structure changed and when we topped out, where you can see the RSI is over here, volume भी weekly time frame पे red होने वाला है और आपने ये देखा कि इधर से नीचे गई. It tried to hold it as support but we started making lower highs and then all the way down. आप ये देख सकते हैं कि we came back up only over here in January of 2023 is when we came back above the bull market support band. So right now we're currently holding the bull market support band and there are chances that we keep testing this again and again, which is very very healthy. And as long as we stay above it, so Bitcoin will stay uh, relatively bullish. But we can see कि अभी ये जो green bars हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं and then the RSI is starting to come down also. So I expect one final crash to happen sometime in September and October, and when the halving happens उसके बाद फिर हम will make it as support again and then keep following it. अगर थोड़ा सा हम पीछे और जाएं और एक साइकिल को देखें 2017 की 16-17 की साइकिल को देखें, you guys can see the same thing also. And I think this was a very healthy cycle in terms of it testing the bull market support band. Again याद रखिएगा ये HTF पे हम use करते हैं and this is mainly used on Bitcoin only. Okay, so in this cycle you guys can see okay, once the halving happened, we came back down and tested it, went back up, came back down, tested it, went back up, came back down, tested it, which is very very healthy for the market. And then finally we went up all the way over here और इस जगह पे हमने आके फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गए और फिर इसको आके टेस्ट किया. You see how it's bouncing exactly from the bull market support band. It's actually astonishing how good this indicator is and these moving averages are. So उसके बाद जब हमारा all time high बना and we had this parabolic move up towards 20,000, उसके बाद देखें we came back up, tried to hold as support, we didn't, and then eventually went down 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 and
क्लोजर टू द हैविंग, आप देख सकते हैं हैविंग से ये इस फेज़ में है हम अभी करंटली। तो इसको ऊपर गया, होल्ड किया, इवेंचुअली इट वेंट डाउन बिलो, देन वेंट बैक अप, वेंट डाउन बिलो, लेकिन उसके बाद फाइनली इट वाज एबल टू गेट बैक अबव इट इन 2020 एंड इट फॉलोड। सो इसके ऊपर हमने बहुत नज़र रखनी है व्हेन एवर यू लुक एट the BTC chart on the weekly time frame. It's very important that you look at these averages and look at the bull market support band to see the health of the market. So ये एक चीज़ होगी जो हमने देखनी है, which is important and which we have to keep an eye on. Now you must be wondering कि इस किस्म का कोई और इंडिकेटर हो जिसको हम यूज़ करके बाकी कॉइन्स के ऊपर भी देखें, और अगर हम LTF पे भी उसको यूज़ कर सकें, तो ऐसा कोई इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेजेस के साथ बने? तो द आंसर टू दैट इज़ एब्सोल्युटली यस, देयर इज़ अनदर इंडिकेटर दैट एग्जिस्ट, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा once I delete these lines for you guys. And I'm going to reset the chart. I'm going to turn off the bull market support band, okay, and I'm going to turn on the EMA ribbon. ये EMA ribbon, और बेसिकली इसका भी एग्जैक्टली वही है, मैं इसका नाम भी आपको बताता हूँ. इफ वी गो EMA ribbon, ये the first one, EMA ribbon by this person is the one that we use, okay. Similarly अगर आप bull market support band का लिखेंगे, bull market support band, this is the bull market support band, ये दोनों moving averages के अंदर मौजूद हैं. अब ये जो चीज़ है ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, EMA averages. So if I go on the 1 hourly time frame, right, if I go on the 1 hourly time frame, इसके अंदर मुख्तलिफ moving averages हैं. For example इसके अंदर we have the 20-day moving average, 25-day, 30-day, 35, 40, 55, 45, 50, 55, okay. सो ये सारी मूविंग एवरेजेस हैं जिसके ऊपर ये बैंड बना हुआ है या रिबन बना हुआ है, EMA रिबन. इसका भी यही है, एवरी टाइम any coin that you're looking at, if it's above, like for example we're seeing over here on the 1 hourly time frame, it was below, ठीक है, and now it's gotten above. So anytime on any time frame, whatever coin that you're looking at, if it's above this EMA ribbon, that means it's bullish. For example अभी हम इसको 1 hourly time frame में देख रहे हैं and it's bullish. जब उससे नीचे आ जाता है इसका मतलब है it is bearish. If we go and watch it on maybe the 4 hourly time frame, it will give us another view. So what you want is you want this to be bullish on all time frames. So you see how we're trying to 1 hourly time frame के ऊपर तो हमने reclaim कर ली, लेकिन on the 4 hourly time frame we're trying to get above the bull market, the EMA ribbon. Once you get above this, then you will see an impulsive move towards the upside as you saw over here. आप ये देख सकते हैं इधर से हम नीचे कितना अर्सा गुजारा. Finally when we were able to get above it, we held it as support and then impulsive move towards the upside. So now we're seeing that it's trying to reclaim the EMA moving average, and once it does it will go up. You can use this on any coin on any time frame, but it's better that you use the 1 hourly time frame, the 4 hourly time frame, और जो HTF होता है हायर टाइम फ्रेम्स पे, उस पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. So this was it for the bull market support band and then the EMA ribbon. The final thing that I wanted to talk about was the two things. हमने technical analysis की बात कर ली है. Now we want to talk about fundamental analysis, right? Fundamental analysis and sentiment analysis. Sentiment analysis को understand करने के लिए Twitter I think is a really good place. और sentiment का मतलब है कि overall market क्या feel कर रही है. Or I think there's a tool that you can use also. If you go on Google and type in market sentiment indicator crypto, so there's a free one which shows you crypto ka greed and fear index. This is very important also. So now if you see right now we're in the middle somewhere, neutral है अभी जो sentiment है. Sentiment का मतलब है लोगों को क्या लग रहा है कि
फियर जब होगा तो लोगों को लगेगा कि मार्केट तबाह बर्बाद होने लगी है, ख़त्म होने लगी है। और जब ग्रीड की तरफ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि पीपल आर ग्रीडी, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉफिट्स। सो this is a good example that the RSI probably will be in the overbought zone. So आप ये समझिए ये overbought है और ये oversold है. Remember this one saying that when others are fearful, that's when you become greedy, and that's when you buy. So simple सी theory है कि ये आप समझे RSI की oversold zone है, ये overbought zone है, and this is somewhere in the middle. When it's going towards the overbought zone, that's when you start exiting because everyone is feeling bullish. हर किसी को लगता है कि ये बस pump करता ही जाएगा. And I think ये जो Elon Musk, when he started promoting Doge in the last bull market, everyone was bullish on Doge and thought that it would go to $1, and it did not go to $1, right? और जब नीचे हो तो हर किसी को लगता है कि अब बिटकॉइन 10,000, 15,000, 16,000 पे आ जाएगा. एंड दैट्स वेयर ऑल द इंस्टीट्यूशंस बाय. और ये जो फियर और ग्रेड को कंट्रोल करता है, ये बेसिकली मीडिया करते हैं बाय गिविंग यू दिस न्यूज़. एंड आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट मॉड्यूल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कि आपने कभी भी जो ओवरऑल सेंटिमेंट मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है वो नहीं दिखाना, बिकॉज वेल्स हमेशा RSI की बॉटम से बाय करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं. तो वी वांट टू बी पीपल हु बाय एट बॉटम्स आल्सो. सो दैट्स व्हाट सेंटिमेंट इज. कमिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली वो होता है जो एक दफ़ा टेक्निकल एनालिसिस कैन चेंज, राइट? सो इट कैन बिकम बुलिश, इट कैन बिकम बेरिश. The sentiment analysis can change, fear and greed can change, but fundamental analysis is something which cannot change. Fundamentals of a coin are established when the coin is being made, और उसके बाद फिर उसके फंडामेंटल चेंज नहीं होते. फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो हम ये कहते हैं कि इसका एक सर्टन सप्लाई 22 मिलियन का, उसके बाद इसका सप्लाई ख़त्म हो जाता है. ठीक है, एक ये फंडामेंटल चीज़ है बिटकॉइन के बारे में. देन वी से फंडामेंटली इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. दीज आर द फंडामेंटल्स that it will never change, and it tends to outperform other assets. These are some of the fundamentals of BTC. तो ये जो कुछ चीज़ें जिनको हम देखते हैं, एंड इसी तरीके से आप बाकी अगर किसी कॉइन के अंदर देख रहे हैं तो सी व्हाट द नैरेटिव्स आर. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बॉट्स का बहुत ज़्यादा नैरेटिव चल रहा है. आई एम श्योर अगर आप ये बाद में देखें तो यूनिबॉट वाज वन एग्जांपल. एंड देन इवन विद मीम कॉइन्स देखें कि कौन सा मीम कॉइन कल्चर इज गोइंग ऑन. Hamster racing was one, in July of 2023, which was really popular. And उससे और भी बने narratives. So when you see a narrative, and especially when it's backed by big people like exchanges, launch pools, launch pads, और उनका narrative जो current narrative चल रहा है उसके मुताबिक हो social media पे, those are coins that you buy for long term. I talk about these coins extensively on my YouTube channel as well as our Discord. तो अगर आपको कोई confusion है, and if you don't understand something, you're more than welcome to go back and watch this lecture again. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो the Discord link for my community is in my Instagram bio. You can always go there and join the free group and become a part of our community. So this was it for module 9. We're 90% done. There's one more module left, and we will wrap up the course with that. Once again, congratulations to you. And you should be proud of the fact that you've come this far. Excuse me, come this far. And I wish you nothing but the best in your crypto journey. I will see you in the last module. Until then, take care of yourself and your family. Goodbye.